पोषण पा भाई पोषण पा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। विषमृत, छुपन छुपाई, पिट्ठू गरम, स्टापू, ये सब हम खेलते हुए बड़े हुए हैं। बड़े हुए तो दूसरी गेम्स भी खेलते थे, पर ये खेलना हमारा रोज़ का काम था। आज पिट्ठू खेलेंगे, एक पिट्ठू को वो गीटी के ऊपर गीटी के ऊपर गीटी लगाई, और एक बैठ के जो गर्ल्स खींचती थी मार्बल्स, वो पहले उनको बनाना, फिर पूरा ढूंढ के मार्बल लाना, उनको एक जैसी शेप देना, उस शेप फिर बैठ के अच्छी सी ज़मीन को साफ़ करके फिर हम बैठ के खेलते थे। लूडो, कैरम, सो ऑल दीज गेम्स वर प्लेड रेगुलरली एट होम्स व्हेन देयर वर नो टेलीविजन्स। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री प्ले की। In my last video, I had mentioned that in this video, I'll be talking about free play. Thanks a lot for your compliments, for your comments, for sending your suggestions to me. I'll try to incorporate all of them. But if you are new to my channel, please subscribe, share, and pass it on to those who can benefit from it. आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप टीचर हैं या पेरेंट हैं, कि फ्री प्ले का बच्चे की लाइफ में क्या महत्व है। हाउ डज फ्री प्ले हेल्प इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली फिजिकल बट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। प्ले बाय डेफिनेशन इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड. It's the self-directed aspect of the play that gives it its educative power. ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि बच्चों की जो फ्री प्ले है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेइंग विद ईच अदर, they are deprived of going to neighbors' house, they are deprived of playing in the evening outside with neighbors. Yes, I'm not talking just about this pandemic time, I'm otherwise also. There is a lot of change, there's a lot of shift. From school, it is an extended school that they keep following in a structured way. They go for activities, they go for dance classes, they go for cricket classes, which are again equally structured, where the child does not have the liberty to explore, to think, to be creative. So they are always under the adult supervision, guidance. They are being constantly monitored. अभी हमें ये जो आज बात करनी है वो है कि एक्चुअली फ्री प्ले से होता क्या है. वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, वाई एम आई क्रिएटिंग अ कॉन्टेंट जस्ट ऑन दिस. सो सबसे पहली चीज़ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कही है या एजुकेशनिस्ट ने कही है कि फ्री प्ले से बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसकी फाइन मोटर स्किल्स, उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं. ऑफ कोर्स दे आर रनिंग अराउंड, दे फॉरगेट ऑल of their stresses, whatever has happened at home or in school. So that's their happy time, which is extremely important for a child to experience that abundance of happiness, energy, bubbling with energy, running around, you know. Second thing is social emotional learning. While playing, they learn to coordinate, cooperate, एक दूसरे के साथ temperament adjust करना, risk taking ability. When they are playing, they know how much to, jump and how much to tackle those risks. They become so observant. They become problem solvers. They become empathetic. From narcissism, they become more empathetic and caring for each other. They know how to give turn to the other person. They learn how to accept failures and rejections. अगर पीयर ग्रुप में उसको उस बच्चे की बारी नहीं आ रही तो उसको उनको एडजस्ट करना आता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना आता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन इट्स ओन विच यू डू नॉट इवन हैव टू बॉदर. बट हियर दे आर क्रिपल्ड, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फ्री प्ले. इन एन एक्सपेरिमेंट इट हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू mammals, it has been proved if they are deprived of this freedom of expression, freedom of play, and when they are put with others, they will have fear, they will freeze, they will have phobias, they will have anxieties, and the rise in these anxiety attacks, anxieties and depression in the age group of 5 to 8 is tremendous. As they grow up to be young adults, teenagers, the depression, the suicide rates,
they are increasing because they do not know how to tackle life. They are not problem solvers. They do not know how to adjust with each other. हमारे ज़माने में अगर घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती थी, हम कहते थे जाके दौड़ के साथ वाली आंटी से ले आओ, चीनी की कटोरी ले आओ, कुछ छोटी सी कोई और चीज़ है जो आंटी से ले आओ. हम एक दूसरे के साथ घरों में बैठ के जो आंटी ने बनाया वही खा लिया, उनके घर जाना. So there was a lot of activity which was happening. We did not have these boundaries. This is my home, this is their home, and children were not so scared of this child abuse. There was nothing like this earlier. So we again need to build those safe places for our children, extending our home to our neighbor's home, allow them to mix around with their neighbors, so that they know कि हम एक दूसरे के सुख दुख में कैसे काम आते हैं, हम मिल के त्यौहार कैसे मनाते हैं, हम एक दूसरे के बच्चों के घरों में कैसे जाते हैं. अगर हम ये जो प्ले डेट्स, दैट टू इज़ सो वेल प्लान्ड, where even each and every minute of the child is decided and they are not again allowed to explore, that's again not a free play. If you send them for adventure camps where there are 4 people watching over them, there are instructors to guide them, again that's not a free play. So when we say free play per se, that is unstructured. जैसे खेलना है वैसे खेलो, पिलो फाइट करनी है, कुश्ती लड़नी है, एक दूसरे को धक्के मारने हैं, कुछ भी करना है, पर वहाँ पे कोई एडल्ट सुपरविजन नहीं है. ऑफ कोर्स यू विल नीड टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. दैट डजंट मीन कि हमने छोड़ दिया और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अगेन गिविंग देम द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, टू बी ऑब्जर्वेंट, to have those exchange of feelings, of care, of love, of affection. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए. स्पेशली जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको ये फीलिंग होती है कि दे हैव ऑलवेज बीन कंट्रोल्ड, देयर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन कंट्रोल्ड. उनको ये पता ही नहीं है कि अपना टाइम का क्या करना है. आप देखोगे कि अगर आपने बच्चे को कुछ शो लगा के दिया और थोड़ी देर बाद आएगा क्या करूं, हर थोड़ी देर बाद आएगा क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, कोई फ्रेंड नहीं है खेलने को, क्योंकि उनको पता ही नहीं अपने आप से क्या करना है. अगर आप अपने आप खेलने दोगे तो उसको पता चलेगा कि अपने आप भी कुछ करते हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. So my humble request to each and every teacher, parent is that allow them free play. In earlier times, if you talk about Finland, if you talk about Japan, they have 1 hour of recess break time where children are allowed to play. Between each period also, there is a 5 to 10 minute break where the children are left to play themselves so that they get rejuvenated, they get again energized to concentrate in their studies. Here, once the child is inside school, 7:30 if the bell rings, the 8 hours continuously they are being monitored. There's hardly any time where children are allowed to freely run around and play. So, my dear parents, take care of their free play so that they are stress-free, they are anxiety-free, they are depression-free, they have much more human interaction. Allow them to talk to their neighbors, to freely move around, build bonds, build human bonds, I would say, and allow them to grow naturally just like plants. Thank you. I hope this helps. Keep watching. This is Indu Punj signing off.